Hello, good morning, students. I told you that you should learn by heart the continuous tense. In continuous tense, we studied present and past continuous tense. Today, we will study future perfect continuous tense. Continuous tense but in future and it is perfect. जो काम खत्म हो गया होगा. Perfect means completed. Perfect means completed. Continuous means in progress. यानी वह काम फ्यूचर में ही खत्म हो गया होगा. This tense, future perfect continuous tense, used an action which will begin in before a definite moment in the future. एक definite moment होगा, definite time होगा और वह भी फ्यूचर में वह काम वह एक्शन खत्म हो गया होगा. ये इसको हम स्ट्रक्चर से और इसके एग्जाम्पल से समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, this simple sentence, first of all we learn that we use will have been in future perfect tense. He will have been completing his work. वह अपना काम खत्म कर रहा होगा, यानी उसका काम फ्यूचर में ही खत्म हो गया होगा. For another example, when we use the example of this book, that we follow, by the end of the year, साल के अंत तक, by the end of the year, I shall have been living in Delhi for 7 years. Here, this sentence shows that हम भविष्य में रह रहे होंगे दिल्ली में 7 वर्षों के लिए. ये भविष्य की बातें हैं, फ्यूचर की बातें. फ्यूचर में बता रहा है कि साल के अंत तक हम 7 वर्ष से रह रहे होंगे, यानी इस साल जब पूरा होगा तो हम दिल्ली में 7 वर्ष मेरा पूरा हो जाएगा रहते हुए. ये सेंटेंस हम समझेंगे एक और सेंटेंस से. By the end of this month,
यहाँ इस सेंटेंस को देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, कंटिन्यूअस टेंस को समझने के लिए ये एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, इसको आप समझिए, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ जाएगा। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी ये मंथ अभी खत्म नहीं हुआ है, ये मंथ जब खत्म होगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू विल हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल, स्कूल में आपको पढ़ते हुए 3 साल हो जाएगा, फॉर 3 years, तुम्हारा 3 साल हो जाएगा। अभी ये महीना पूरा नहीं हुआ है, महीना पूरा होगा उस समय तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा, 3 साल स्कूल में, इस स्कूल में पढ़ते हुए। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू विल हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years। एंड द स्ट्रक्चर, for future perfect tense we use will have been, will have been for all subjects, subject plus will have been plus verb 4 plus other words or object since other words। here पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल हैव बीन सारे सब्जेक्ट में के साथ होगा, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और अदर वर्ड्स। We frame sentence, I will have been here in the end of this year। I will have been working here in the end of this year। Second, if negative sentence, he will not have been living there। For negative sentence, he will not be used after will, been living there। Now I give you some question from your book Cornerstone, and you try to fill the blanks for exercise to learn future perfect tense। In your book, sheet number 3, page number 78,
Here next year I dash in this company for a decade. You use future perfect continuous tense to fill the gap. I use verb, anyone verb. I will have been working in this company for a decade. Second question. Second question, on Sunday we dash in this house for a year. We will have been living in this house for a year. Third, by next week I dash this book for 3 years. I will have been reading, writing. By next week I will have been writing this book for 3 years. And next exercise number 78, set 1, 2, 3 and E and F. You should complete in your book or in your notebook. I will answer next classes, and we have completed tense, simple present tense, past tense and future tense. There are 4 types of present tense and 4 types of past tense and 4 types of future tense. So we have completed all the tense. There are 12 tense all we have completed, and you should revise thoroughly, and I correct your answer in the last of this chapter. The question of this chapter that is given in the last of this chapter, and next day, and we will start another chapter next day. Today you should
take down these questions for exercise and learn all the tenses thoroughly. Thank you.